भारत के कप्तान शुभमन गिल इतना ज्यादा चोटिल क्यों होते हैं? ये सवाल आपके मन में भी आता होगा, क्योंकि हर सीरीज के पहले कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि शुभमन गिल इंजर्ड है, शुभमन गिल पूरी तरीके से फिट नहीं है। अब भारतीय टीम श्रीलंका में जब गई, सीरीज शुरू होने वाली थी, वार्म अप मैच के पहले ही खबर आ गई, वहां पर शुभमन गिल फिट नहीं है। अब टेस्ट सीरीज होनी है, उनकी फिटनेस फिलहाल तो अच्छी बताई जा रही है, लेकिन फिटनेस को लेकर इश्यूज शुभमन गिल के साथ रहे हैं, किसी भी खिलाड़ी के साथ हो सकते हैं, वो देखिए पार्ट एंड पार्सल इस गेम का है। लेकिन इस वक्त इंडियन क्रिकेट में इंजरी सबसे बड़ा विषय बना हुआ है, जो कि बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक दो नहीं 13 खिलाड़ी इस वक्त अपनी इंजरी से उबर रहे हैं, और खुद कप्तान शुभमन गिल, जो कि 2 फॉर्मेट के कैप्टन है, इन एंड आउट उनको इंजरीज होती रही। उनकी इंजरीज क्या भारत के लिए इतना बड़ा कंसर्न है? ये सवाल मुरली कार्तिक से पूछा गया था। मुरली कार्तिक का कहना है, देखिए, जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता शुभमन गिल को इतनी सारी इंजरियां क्यों हो रही हैं। I don't think from a batting point of view, it's unless and until he's not in form, that can happen to any batter, Jagdish. So from that point of view, I'm not worried about Shubman Gill at all, because he's a class act and he'll find a way to get runs. The most important thing is you want him to be fit, because he's been plagued by lots of injuries, lots of niggles. He starts a series and then he misses a few games, and you just don't want that. Even in the warm-up game, he didn't start. So from that point of view, and from the point of view, as a sportsman, I can tell you one thing, that you want to feel 100% with your body. Otherwise, if you have niggles and some part of you is aching, you're never able to give your 100%. So from that point of view, I would want him to be fit and hale and hearty. From a point of view of a skipper, look, you're as good as your last game. You're as good as your last series. And with you having that crown on your head, I think heavy is the head which wears the crown, especially in Indian cricket. So for that, Shubman Gill will always be questioned, whatever he does, whatever he's going to do. And the most important thing is, there are so many people who will dissect his every move. So it's never easy. There's a lot of pressure on him, and there's a lot of pressure on this series as well, because it's crucial for India's chances in the WTC. बिल्कुल भाई, शुभमन गिल फिट रहे सबसे जरूरी है, क्योंकि टेस्ट फॉर्मेट हो चाहे वनडे फॉर्मेट हो, दोनों की कप्तानी उनके पास है। WTC तो चलिए एक बार के लिए अगर आप हटा दें, लेकिन 2027 वर्ल्ड कप इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त भारतीय क्रिकेट के लिए। सभी खिलाड़ी 2027 वनडे वर्ल्ड कप की तरफ देख रहे हैं। शुभमन गिल कैप्टन ऑफ द शिप है, तो नजर उनके ऊपर होगी। शुभमन गिल फिट रहे, साथ ही साथ उस वर्ल्ड कप के लिए भारत के ज्यादातर खिलाड़ी भी फिट हो जाए, जिसके लिए वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को काम करना होगा। वीवेस लक्ष्मण जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के हेड है, उनसे पूछा भी गया कि क्यों इतने खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं भाई, क्या वहां पर कम्युनिकेशन गैप हो रहा है आपके और जो टीम मैनेजमेंट है, सेलेक्टर है, उनके बीच में? क्या सही रिपोर्ट नहीं भेजी जा रही है? सिलेक्शन हो जा रहा है वहां पर? श्रीलंका के लिए बुमराह का सिलेक्शन हो गया था, साई सुदर्शन का सिलेक्शन हो गया था, नाम के आगे सब्जेक्ट टू फिटनेस लिख दिया गया था, वो फिट नहीं थे, फिर बाहर हो गए, आपको रिप्लेसमेंट प्लेयर भेजने पड़े। क्यों हो रहा है? क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है? लक्ष्मण ने कहा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कम्युनिकेशन पूरा होता है, एक चैनल है जिसके थ्रू हम वहां पर अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, फिर सिलेक्शन होता है। पूरे प्रोसेस को वीवेस लक्ष्मण ने समझाया है, आप भी सुनिए। I think we don't like to use the name blame, because when you're using the blame, then you're finding someone as a scapegoat, So I don't think, so maybe I don't know what you all feel, and you start blaming because of this and because of that. But there's a brilliant coordination between the COE, between the team management of both the teams and the SSM staff of both the teams and the selection committee. Now you're talking about Bumrah and Sai Sudarshan. When we send a fitness status report, and the process is that the selector reaches out to the COE asking for the fitness status report, and we collect the current fitness status and send a fitness status report to the selection committee chairman or chairperson in women's selection committee, with a copy to obviously the head coach of both the teams and the BCCI. Now, Bumrah and Sai Sudarshan, there's always an asterisk, and this is one thing which you all will know, that when the media release comes from the BCCI, there's an asterisk attached to a player selection. And what does that asterisk mean? It means subject to fitness. So Bumrah and Sai Sudarshan were going to be picked to Sri Lanka subject to fitness clearance. And as I told before, you assess them, you move them from one stage to the next stage, and if the progression is slow, you communicate to the selection committee chairman and the head coach, which is happening seamlessly, and they understand that they're not yet ready to participate in an international series. Always it's player-centric and team-centric. So that communication is happening seamlessly. So the subject to fitness is something we require to keep in mind. Any press release, and I think what the BCCI has done is there is transparency in all the fitness reports and also the selection. At the end of the selection,
whether it's it's a release to the press, it's clearly mentioned that these players are picked subject to fitness. Means if they don't clear the fitness test here, that means the selectors will know who are the other players who will go in their place if they don't clear the fitness test. I mean, it's basic common sense.